is this shifting the blame? मैं आपको बताती हूँ क्यों. अब हमें अब Chaitanya is a young person और ये हमको बोल रहा है कि politics has to be part of the conversation. Unfortunately, in the last 8 years, 9 years, politics has become such a big part of the conversation कि हर WhatsApp group में तो लड़ाई हो जाती है mamas and buas and chachas के बीच में. So how is it possible that young people in this country are completely divorced from the politics that is happening around this country? In fact, they are people, young people have a mind of their. एक मिनट young people have a mind of their own. They know who they like and who they don't like. No students, ma'am, for the last 25 years in Mumbai, there has been no students' election union. If you talk about politics on campus, there are no representatives. Only political party representatives are not the way to try and get young people into politics or young people into participate in the process of elections. ठीक है चैतन्य. Okay, let Naved respond. Naved बोलो. श्रेया, चेतन, आप जो बोल रहे हैं, देखिए पहली बात तो ये है कि एक जमाना था जब पॉलिटिक्स को लोग, ये इसमें कोई दो राय नहीं, जब पॉलिटिक्स को लोग बोरिंग समझा करते थे. बहुत पहले की बात है, जब मेरा बचपन था या आपका भी बचपन होगा, बहुत बोरिंग समझा करते थे, इंटरेस्ट नहीं लेते थे. आप अगर देखें आजकल की पॉलिटिक्स में हर बच्चा इंटरेस्ट लेता है व्हाट्सएप पर, चाहे वो मीम के जरिए हो. कोई यंग इंसान ऐसा नहीं है जिसको पॉलिटिक्स के बारे में ना पता हो. कोई यंग बच्चा ऐसा नहीं है जिसको यह पता ना हो कि वोट करके उसका वोटिंग राइट है. सिर्फ हमें लगता है, अच्छा आप मुझे बताइए कौन सा आप कह रहे हैं कि सिलेबस में हम डाल दें. सिलेबस में भी डाल सकते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, व्हाट्सएप पे आने के लिए, इंस्टाग्राम पे आने के लिए, स्नैपचैट पे आने के लिए. कोई सिलेबस में नहीं डलता है. कोई टीचर नहीं बताता है कि आप स्नैपचैट पे आ जाइए तो आपको फायदा होगा. हमें एक्चुअली ये खुद समझना होगा, ये खुद की एक जिम्मेदारी. देखिए इलेक्शन कमीशन किसी के घर घर जाके ये नहीं बोल सकते उठो चलो वोट डालो, और दे आर मैच्योर इनफ, दे आर 18+. बस मुझे कभी कभी लगता है कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की जरूरत है, जो मुझे ऑनेस्टली ये लगता है. जैसे मैं कई स्टूडेंट से बात करता हूं, मैं पूछता हूं कि तुमने वोट कास्ट क्यों नहीं किया. बोले सर मुझे थोड़ा सा मजा नहीं आता उसमें. हालांकि उसको मालूम है, अगर उससे पूछो कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो, एक फौरन बताएगा कि ये वाली पार्टी. क्यों सपोर्ट करते हो? इसलिए करता हूं. कौन सी जीतनी चाहिए? ये वाली. वोट क्यों नहीं करते? ये नहीं मालूम सर, ये नहीं मालूम मुझे वोट क्यों नहीं करता. कहीं ना कहीं गलती उनकी भी है, और हमारे हो सकता है एक दिन की छुट्टी मिल गई को थोड़ा सा और इसको इंटरेस्टिंग बनाना हो. बिल्कुल सब वोटिंग से ज्यादा खुशी होती है उनको, ट्रस्ट मी, के एक दिन की छुट्टी मिल गई, कि सुबह उठेंगे 11 बजे 12 बजे आराम से उठेंगे, पूरा दिन अपना ऐश से काटेंगे. लेकिन ये नहीं मालूम कि पूरा दिन ऐश से काटने से आपके 5 साल जो बिना ऐश के गुजरेंगे. अगर आप जिस पार्टी को चाहते थे वो पार्टी नहीं जीती, क्योंकि आप ही जिम्मेदार हैं ना, आप वोट नहीं कास्ट कर रहे, तो आप जिम्मेदार हैं. फिर रोते रहिए 5 साल तक यार मैं काश में कर देता वोट. Chaitanya, we don't want to sound like two old people who are berating young people in this country, but young people in this country also have to take responsibility and not pass the blame and not pass the blame on everyone for things that they aren't doing that they should be doing. No, simple casting a vote. No, exactly. I agree with you that it needs to increase, the interest needs to build out. But then we need to ask the question that why is this happening? And instead of only putting out the blame that young people are disinterested, we also need to make fundamental changes from down to make sure it doesn't happen. And that's what I'm trying to explain, that if we bring out these changes, there will be a different outcome, because young people need to understand. Like you said, being on WhatsApp and being on Instagram and Snapchat is cool. Voting isn't cool in today's time. So we need to make it. And how do we do it? From schools and colleges. So maybe we need to the culture. Maybe we need to make voting compulsory in this country. Maybe we need to make voting compulsory in this country. I think that may be one way to fix the problem. But then there are, questions of red lines that will be crossed, not crossed, etc. We leave it there. To go about well, that you're right, that may not be the most democratic way, but sometimes you require extreme solutions for extreme problems, and this is an extreme problem when the future of this country is not interested in choosing the future of this country. We may also then we leave it there for the moment. I'm glad put in young people to represent us as well. I think that should also be compulsory, because somewhere down that disconnect is also increasing. Okay.
Okay, but again, as I said, Chaitanya, I don't think it's a good idea for any political party to give a 20. I mean, when you talk about representation, what do you mean? Ticket for younger people, right? You have But to would be you want your 25 at country? least. But Yeah, I'm but saying would you? representation. No, needs I'm to saying, increase. would you want your country to be run by a 35-year-old? Nahi, na. No, nobody's Some saying jobs require the experience. nobody's So saying a harping on 35-year-old has to experience, run the country. giving I'm young saying more people young people representation need may to not be in help. parliament, is what I'm saying. I'm not saying a 35-year-old has to run the country. I'm saying more young people need to be in parliament. I'm not saying a 35-year-old has to run the country. And all I'm trying to say through the process is if you want young people to participate, then you got to remind them the struggle that